So we are done with the adjustments. I think we are left with only one. Hello. Yes, is there any problem? Okay, okay. Please do not talk among yourselves. So we had started with illustration 30 in the last lecture, and today we are going to continue. The last adjustment that we did was, I think, adjustment number 4. So we'll continue from adjustment 5. Value of stock is to be decreased by 10%. So बैलेंस शीट पेज नंबर 200 आपका क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक? 20,000. Now it is to be decreased by 10%. What is 10% for 20,000? It is 2,000. Whenever the value of an asset decreases, it is recorded on debit side of revaluation account. You can see revaluation account, debit side, after machinery, to stock account, 2000. Okay. Now the new value of stock in the balance sheet that we have prepared after admission on page number 202, new value of stock 18,000, which is 20,000 minus 2,000. Okay. Then the next adjustment, sixth one, Vijay will bring 50% of net assets of new firm as the capital and his share of goodwill in cash. So about goodwill we are already done. Second adjustment में there was new value of goodwill 36,000 and what is the share of new partner वो भी हमने सीखा है वर्किंग नोट्स में. उसके बेसिस पे 2 जर्नल एंट्रीज हमने गुडविल की जो रहती है वो पोस्ट की है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में और कैश अकाउंट में. ठीक है. सो वी आर डन विद द कंसेप्ट ऑफ गुडविल. सो एडजस्टमेंट 6 में अभी जो हमने करना है वो इट इज़ अबाउट कैपिटल. नाउ इन ईच एंड एवरी सम इट इज़ क्लियरली गिवन कि न्यू पार्टनर जो है वो कितना कैपिटल ला रहे हैं. इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन दैट वी हैव अंडरस्टूड उसमें ऐसा था दैट द पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल. ठीक है. तो वो कैसे करना था वो हमने पूरा डिटेल में समझा है. नाउ हियर दे से दैट द पार्टनर विल ब्रिंग 50% of net assets of new firm as the capital. Now understand what is net assets. First of all, ये concept आपको 11th में सिखाया गया था. Net assets equals to total assets minus total liabilities. So you can say net assets is just another name of capital itself. बैलेंस शीट जो हमारा रहता है उसमें देयर आर 2 साइड्स, लाइबिलिटीज साइड एंड एसेट साइड. राइट. लाइबिलिटीज साइड क्या क्या होता है? देयर इज कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यस. एंड ऑन एसेट साइड यू आर हैविंग ऑल द एसेट्स. सो अगर आप टोटल ऑफ एसेट साइड मतलब सारे एसेट्स का टोटल अगर आप उसमें से सारी लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो जो आपको फिगर मिलेगा डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल. ठीक है. तो अभी नाउ देर आर 3 पार्टनर्स, न्यू हैज बीन एडमिटेड, सो ओवरऑल 3 पार्टनर्स. ठीक है. तो जो फर्म में टोटल कैपिटल होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? तीनों पार्टनर्स के कैपिटल का जो टोटल होगा वो होगा फर्म का टोटल कैपिटल. नाउ अंडरस्टैंड द एडजस्टमेंट. विजय इज द न्यू पार्टनर और वो लाएंगे 50% ऑफ नेट एसेट्स. नेट एसेट्स इज जस्ट अनदर नेम ऑफ कैपिटल एज आई सेड.
तो 50% कैपिटल फर्म का तो विजय विल ब्रिंग, सो रिमेनिंग 50% जो है वो किसका रहेगा? ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक है, सो ये एडजस्टमेंट हम कब करेंगे? जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का टोटल करेंगे। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर यू आर नॉट प्रोवाइडेड with the clear figure of capital brought by new partner, अगर वो ट्विस्टेड फॉर्म में आपको दिया गया है तो वो एडजस्टमेंट आपको हमेशा लास्ट में करना है। टोटल करने वाला जो हमारा स्टेप रहता है तब ये एडजस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, अदर देन दिस ऑल द एडजस्टमेंट्स हैव बीन डन। So the next step is, let us check in the balance sheet that which are the items left to be recorded विदाउट एडजस्टमेंट। जिन आइटम्स पे एडजस्टमेंट नहीं था वो रिकॉर्ड करना अभी भी बाकी है, तो वो देख लेते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम द लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, पेज नंबर 200। द वेरी फर्स्ट थिंग मेंशन्ड ऑन दैट साइड इज कैपिटल अकाउंट. It is of Shivani and Neeraj. This we have already written. On credit side of partners capital accounts, by balance brought down 1 lakh and 1,50,000. Okay. The second thing, on credit side, it is profit and loss account. Then we have general reserve. Then we have creditors and bad debt reserve. Profit and loss account credit side दिया हुआ है, that means this is a part of profit, this is accumulated profit. If this is on credit side of balance sheet, it is to be credited to partners capital accounts. Partners capital accounts credit side, by profit and loss account 3,000, 6,000. This is distributed in their old ratio, just like you distribute general reserve. Yeah, profit and loss account, general reserve, workman accident compensation reserve, sorry, fund, and this investment reserve. These are all distributed among partners if they are not utilized at the end of the year. ठीक है, so credit side by profit and loss account 3,000, 6,000 old ratio में. Similarly, even sorry, even general reserve has been credited to partners capital accounts. Credit side देखिए partners capital accounts में by general reserve account 5,000 and 10,000, ये भी old ratio में है. ठीक है, then we have creditors. Bad debt reserve तो हो गया है, adjustment था उस पे. So creditors is left, उस पे I think कोई भी adjustment नहीं था. So it will be returned as it is in the new balance sheet credit side 25,000. And as I said, whenever you are writing anything in the new balance sheet on liabilities side, you always have to leave some space, at least 3 to 4 lines, so that you can record the closing balance of partners capital accounts जो हमें लास्ट में मिलता है. Right, so before that if you want to write anything, you should write it below the amount of capital, मतलब उतना necessary space you have to keep. Now on debit side of balance sheet, we have goodwill. As I said, this is the old value of goodwill and this is to be written on debit side of partners capital accounts in their old ratio. ये जब हम goodwill के adjustments कर रहे थे तब आपको मैंने करवा दिया था. ठीक है, then जिन जिन items पे adjustments थे वो items पे आपने टिक किया होगा, so directly you can skip those items. We had an adjustment over machinery and also on land and building, then stock, debtors, ये सब हमने record किया हुआ है.
Then the only item left to be recorded is bills receivable, as it is in new balance sheet 10,000. Alright. So we are done with the adjustments and posting of the remaining items, and we are left with only adjustment number 6, वो भी half. तो अभी हम करेंगे टोटल. रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाइए, पेज नंबर 201 पे एवरीवन. टोटल करते हैं. Total of credit side here is more compared to the total of debit side. Total of credit side is 3,000 plus 15,000, which gives you 18,000. Whenever the total of credit side of revaluation account is higher, the result of revaluation account is profit. And if the total of debit side is higher, the result is loss. Whatever the result is, let it be profit or loss, is to be transferred to partners' capital accounts. Yeah, because partners are responsible to bear if it is profit or even the loss. Yeah, so 18,000 minus 10,000 minus 2,000 gives you 6,000. This is the profit on revaluation. Profit is to be transferred to old partners' capital accounts in old ratio always. So 2,000 and 4,000 as per the old ratio. What is their old ratio? It is 1:2. So 6,000 has been distributed in 1:2. Now this is profit. प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट किया जाता है. अदरवाइज ऑलवेज रिमेंबर कि एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में जब आप आंसर ट्रांसफर करेंगे तो इट इज टू बी ट्रांसफर्ड ऑलवेज ऑन opposite side. So here it is on debit side. So in partners capital accounts it will be on credit side. By revaluation account, partners capital accounts credit side, by revaluation account 2,000 and 4,000. Okay, then अब नेक्स्ट अकाउंट का टोटल करेंगे विच इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नाउ वी आर नॉट अवेयर that how much amount of capital has been brought by new partner, that is Vijay. So in that consideration they say that Vijay will bring 50% of net assets, so remaining 50% will be about Shivani and Neeraj. So let us obtain the closing capital, the balance of closing capital for old partners first. उसके बेसिस पे हमें विजय का कैपिटल मिल जाएगा. ठीक है. So Shivani and Neeraj, the total for credit side of Shivani and Neeraj is higher obviously, which is 1,14,000 and 1,82,000 respectively. So it is written on both the sides. जिस किसी साइड का टोटल ज्यादा है उसको आपको दोनों तरफ लिखना है. Now the total of debit side will be deducted from the the total of debit side will be deducted from the total of credit side, and the balancing figure you can see on debit side, partners capital accounts. To balance carried down, it is 1,05,000 and 1,64,000. ये हमें कैसे मिला? 1,14,000 minus 9,000 and then 1,82,000 minus 18,000. All right. So you've obtained the amount of closing capital for Shivani and Neeraj. Yes.
And I repeat, this is the 50% of net assets. Why? Because remaining 50% तो विजय लाने वाला है and total is always 100%. Let us check the working note to understand this in a better way. Page number 202, please pay attention. The adjustment which is left to be recorded is explained here. Vijay brought 50% of net assets of new firm as capital. Now, as I said, net assets equals to total assets minus total liabilities. Total assets minus total liabilities is total capital. पूरा कैपिटल आपको कब मिलता है? When you are deducting the liabilities from assets. Yes? So 50% of total capital is brought by Vijay as his share of capital in new firm. उनको प्रॉफिट में जितना शेयर दिया जाएगा उसके हिसाब से उनको कैपिटल का अमाउंट लाना है. अंडरस्टैंड? कैपिटल ऑफ शिवानी एंड कैपिटल ऑफ नीरज which is 1,05,000 and 1,64,000, making it as 2,69,000, the total 50%. ठीक है? अब अगर 50% कैपिटल दोनों का मिला के 2,69,000 है तो रिमेनिंग 50% कितना रहेगा? ऑफ कोर्स 2,69,000 अगेन. ठीक है? Fine. So we have obtained that how much amount of capital is brought by Vijay. I'll quickly repeat this. See, 1,05,000 and 1,64,000 is the amount of capital of old partners. ठीक है? और वो दोनों का कैपिटल का अगर आप टोटल करेंगे तो वो रहता है 50%. तो what is the remaining 50% of this? Yes, of course, the same. 2,69,000 again. Yeah. So now the posting. पहले जर्नल एंट्री हम समझते हैं इसकी. कैश अकाउंट डेबिट 2,69,000 टू विजय's कैपिटल अकाउंट. तो इसका पोस्टिंग इन कैश अकाउंट. Debit side you can see it is written to Vijay's capital account 2,69,000. Second effect, in partners capital accounts by cash account 2,69,000. Alright, then the total for this, of course, total of credit side for the column of Vijay is more. So again the closing balance of capital on debit side is 2,69,000. Alright, so we have obtained the amount of capital brought by Vijay. Now the amount of closing capitals will be transferred in balance sheet liabilities side. Shivani, Neeraj and Vijay. So the total capital is 5,38,000. Alright. Fine. So now we are left with cash account and then balance sheet. Now see, the total of debit side of cash account is more. 20,000 plus 16,000 plus 2,69,000 gives you 3,05,000. And there is nothing to deduct on credit side. So the closing balance of cash account is by balance carried down the same amount, 3,05,000. Okay. So this is on credit side. So will be transferred on debit side of balance sheet. You can see after debtors it is written in the new balance sheet 3,05,000. Alright. Finally, अब हम टोटल करेंगे बैलेंस शीट का जो दोनों तरफ का सेम ही आना चाहिए. So liabilities side 5,38,000 plus 25,000 plus 5,000 gives you 5,68,000.
एंड ऑल्सो एसेट साइड अगर आप टोटल करेंगे तो यही टोटल आएगा. ओनली इफ यू हैव नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक प्रीवियसली while solving the sum. अगर कहीं पे कोई भी छोटी छोटी मोटी गलती भी अगर आपने कर दी तो आपको दोनों तरफ का टोटल इक्वल नहीं आएगा. ओके, so this was illustration 30. We are having a same sum in your exercise. Firstly, you will practice this बहुत ही ध्यान से and especially adjustment number 6. जब आप सम कर रहे हैं तो आपको वर्किंग नोट्स कंपल्सरी करना है फॉर प्रैक्टिस वंस यू गेट हैबिचुएटेड विद दिस टाइप ऑफ सम्स. तो जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो जाता तब तक आपको वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करनी है. ठीक है, so you will practice this sum and you will definitely let me know if you are having any doubts in this particular sum, sorry, illustration I mean. And then as I said in your exercise, the long sum question 19 is similar to this. Yeah, पेज नंबर 214 उस पे सम दिया हुआ है. It is just similar to illustration 30 that we have done, that we have just finished right now. तो पहले वो illustration आपको अच्छे से practice करना है and then you will solve this sum. And as I have always said कि सम सॉल्व करने के बाद जब आप टोटल करने के स्टेप पे आते हैं तो मेक श्योर कि आप जब रिवैल्यूएशन का टोटल करें तो वो टोटल आप पहले आंसर्स जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं उसको चेक करें एंड देन ओनली ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट अकाउंट. बिकॉज अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल गलत है तो डेफिनेटली गलत टोटल नेक्स्ट अकाउंट में आप अगर ट्रांसफर करेंगे तो नेक्स्ट अकाउंट का टोटल भी गलत ही आने वाला है एंड सो ऑन. फाइनली आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा. ऑलराइट, सो प्लीज कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड. सो question number 19, all the adjustments also are nearly similar. Fine, so this you are going to do in homework and please let me know if you are having any doubts. So we'll end this here today. Yeah, all right.